सबसे बेशरम चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। हम वक्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब। ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिएगा। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। Hello, today I will say a new story. The story of the Grateful Starfish. One morning, an elderly man was walking along the beach when he noticed a young boy picking something off the sand and throwing it into the sea. As he got closer, the man realized the child was throwing strange starfish that had washed up on the shore back into the breaking waves. Approaching the boy, the man asked what he was doing. The starfish will die if they still on the shore when the sun rises, he replied. Perplexed, the old man said, but that's pointless. There are countless miles of beach and thousands of starfish. It doesn't matter how many you return to the water. You can't make a difference. Unfazed, the boy bent down, picked up another starfish, and tossed it into the sea. It matters to this one, he said. Moral of the story: no matter the odds of success or the skill of the challenge, your action can make a difference. It's better to light a candle in the dark.